This is ANANT ARYA from ANANT Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Alan Akash Bansal classes and Career Point. Today I am going to start a new chapter, that is work, power and energy. And for shortening the duration of this video, I have written all the contents on the board. So you can take a screenshot and write on your notebook. So at first of all, I am going to define the definition of work. So it is the product of the force. It is the product of force and displacement of the point of application of force in the direction of force. At first we are going to understand the definition of work. This is work is equals to vector product of force and displacement. Actually dot product represent that the displacement must be in the direction of the force, as I have written already here. This यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे देखिए, द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए. तो अगर डॉट प्रोडक्ट हटाए गए तो हियर द वर्क बिकम्स वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. You can see my vector series to understand this dot product. So work done is equals to force dot vector f vector dot s vector, that is force dot displacement vector. So work is equals to f s cos theta. इसको समझते हैं डिटेल में. See, like this, here is a block and a force is applied here, that is F force in that, and the displacement here is S. The displacement here is S and I have applied the force F. So here you can see that the force is in the direction of the displacement. So directly we can see the theta, that is the angle between the force and displacement. Here theta represent the angle between force and displacement. This theta represent about it. So if we see here, that is the angle between force and displacement, it is 0 degree. So we know that the value of cos 0 degree is 1. So work is equals to F s cos 0 degree, that is work is equals to F into S. This is the concept of finding the work done when the force is in the direction of displacement. If we take the another condition, that is if this is a block and we apply a force at an angle theta with the horizontal. तो ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर अगर हम एक फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इंडिकेट दैट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट और फोर्स कंपोनेंट इज मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. हियर डिस्प्लेसमेंट इज एस. सो एफ by the resolution of vector this component becomes f cos theta. So therefore f cos theta into displacement, this in as I have written about the dot product here. So fs cos theta, it becomes fs cos theta. So what is the the work done here is fs cos theta simply, and as well as the theta, there is theta angle. So I have resolved it in the direction of the displacement. So it becomes W is equals to Fs cos theta. Now we are going to see the cases of finding work. So first case is if the force is constant, means that force is not changing. If we apply 5 Newton and after the interval of time it is only 5 Newton. So we say that the force is constant. So we just apply the formula. Work is equals to vector of force into dot product of F and S, that is Fs cos theta, and theta represent the angle between the force and displacement. And this is the first case, when the force is constant. Another case is if force is variable. If force is variable, then we use the concept of integration. So we integrate f dot dx, and we are going to solve the numericals in this all three
cases. So we will we will study it in very detail. So if force is variable, we integrate f dot ds, where force is where f is force and dx is the displacement from x to x1, x1 to x2. And the third case is if if force varies according to graph. If the graph is given between force versus displacement, so we just find the area to find the work done. So like here, if we find the area, so area becomes the area of triangle is half into base into height. So here half into base is here 5 meter and height is 20, so it becomes 50 joule. So by this we are going to find the work by a graph. Now we are going to discuss the properties of work. So first property is that the work may be positive, negative or zero. The work may be positive, negative or zero. So if the theta is acute, and see, this is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. If theta angle between the force and displacement is acute, means that the theta lies between 0 degree and 90 degree, that is in this region. If theta is is less than 90 degree and greater than 0 degree, so work done says to be positive. As you know, well aware about it, that in this first quadrant all trigonometric functions are positive, means therefore cos theta will be positive. So here if cos theta is positive, therefore theta is positive. If we apply write the value of theta, then it will be positive. The second is theta is obtuse, means the theta lies between 180 degree and 90 degree, means that in this quadrant, that is the second quadrant, and you are well aware about that the cos theta in the second quadrant is negative. Cos theta in the second quadrant, as only sine theta and cosec theta are positive in the second quadrant, but cos theta is negative. Therefore if the theta is obtuse angle, then work done is said to be negative. And if theta is 90 degree, then work done is 0. As if we see example, when a person when a कूली जब कोई कुली एक लोड लेकर ऊपर चलता है और उसका डिस्प्लेसमेंट आगे रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0. So this is the clear, as you are clear, theta is 90 degree between the displacement and the gravitational force. So therefore the work done by the gravitational force on the man is 0. And the second property is that when the work done is positive, speed keeps increasing. जब भी work done क्या होता है कि मेरा positive होता है, तो speed keeps increasing. When the work done is negative, speed keeps decreasing. And when the work done is 0, the speed is constant. We see example like this. If a body is in circular motion, like here is the body and here is the velocity. If the work done is 0, this is the displacement, this is the displacement of the body, or this is the velocity of the body. And if a body is in circular motion, there acts a centripetal force inside center. अंदर सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. तो हम लोग देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी के बिटवीन 90 डिग्री है. सो ये क्या है, 90 डिग्री है. तो यहाँ पे वर्क डन, दैट इज कॉस थीटा इज हियर थीटा इज 90 डिग्री, मींस दैट वर्क डन इज 0. तो वर्क डन यहाँ पर 0 है. इसका मतलब यहाँ स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा. सो नाउ we are going to discuss a question by which you will understand a many concept that to find the work done of force, friction, normal and gravity.
So the first we will see the question. A 5 kg block is displaced by force that is equals to 100 Newton, displaces 5 meter. And here the coefficient of friction is given, nu is equals to 0.6. So the question here is to find the work done by force, friction and normal and gravitational force. So work done by force. Here you can see it is very simple that the force is in the direction of the displacement. So the work done, first is work done by force equals to Fs cos theta. Fs cos theta. The force here is 100 Newton and displaces the body by 5 meter, and the angle between the force and displacement is given 0 degree, and cos 0 degree is 1. This is 1. So it will become 500 joule. The first answer is. Now the another question, that is second, is the friction. फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया जा रहा है. तो फ्रिक्शन, अगर बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर, मींस दैट बॉडी आगे मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, पीछे लगेगा, दैट इज एफ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. तो टू फाइंड द फ्रिक्शन, यू नो दैट द फॉर्मूला न्यू इनटू एन, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल, एंड हियर नॉर्मल इज, and this is mg force, that is mg, his mass is 5 into, we take the यहाँ पर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. हाँ, म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. हाँ, यहाँ म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और n है नॉर्मल. तो mg और ग्रेविटी लेके यहाँ पे 10 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये अगर लेके चलेंगे तो ये हम 50 न्यूटन, मीन्स दैट द हेयर नॉर्मल इज 50 न्यूटन. ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल कितना है, 50 न्यूटन है. तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 50, इट बिकम्स 30 न्यूटन. मीन्स दैट इफ द बॉडी इज डिस्प्लेसिंग अहेड, so friction is backward. The friction, that therefore the friction is equals to 30 Newton. Friction is equals to 30 Newton. So the work done by the friction is here. So work done by friction is Fs cos theta. What is the friction force? 30 Newton. 30 into displacement 5 meter. And the angle between the frictional force and the displacement is 180 degree. And you are well aware about that cos 180 degree is equals to -1. So cos into cos 180 degree, and cos 180 degree is -1. So therefore our answer will be 150 joule. Now the work done by the normal force is here. If we made the free body diagram of 5 kg block, the normal force is upward, that is n, and the displacement is ahead. So the displacement आगे, normal ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में कितना है, थीटा है, एंगल कितना है, that is 90 degree. So work done by the normal is, the third is work done by normal is 0. And the fourth is work done by the gravitational force. Gravitational force is downwards and the displacement is ahead. So there is 90 degree between them. So work done by gravitational G is also 0. यहाँ पर देखा हम work done by the gravity force. And last is, अगर हम निकाले work done by the total force कितना होगा, work done by total force. Work done by total force. टोटल फोर्स, तो यहाँ पर एक लग रहा है 500 जूल आगे लग रहा है और एक 150 जूल पीछे लग रहा है, और ये दोनों तो जीरो हो गया क्योंकि इन दोनों के बीच में आगे डिस्प्लेस हो रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है. तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री मीन्स द वर्क डन इज 0. ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, दैट मीन्स द वर्क डन इज 0. तो वर्क डन बाय टोटल फोर्स हियर 500 जूल एंड इट इज इन नेगेटिव -150. तो 500 minus 150 will be equals to 350 joule. So you must understand that
यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर नेट फोर्स कितना, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, नेट फोर्स टोटल लग रहा है आगे 350 जूल. So now in the second question, that is question number 2, find the work done by normal and gravitational force as a function of time. So let this is a box or lift which is accelerating upward. Accelerating नहीं मतलब वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना हो या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v इंटू टी. सबसे पहला ध्यान बाद में, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इंटू टाइम. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है, और दूसरा पहले पूछा है नॉर्मल. तो नॉर्मल कहाँ लग रहा है, इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू, नॉर्मल ऊपर लग रहा है और नॉर्मल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लेते हैं नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी. ठीक है, नॉर्मल जो है वो mg के बराबर होता है, और नीचे लग रहा है एक mg फोर्स, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. नॉर्मल ऊपर mg, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg. तो यहाँ पर वर्क डन बाय नॉर्मल इज, नॉर्मल ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ पर नॉर्मल इंटू वी टी हो जाएगा. वी टी इज डिस्प्लेसमेंट. तो नॉर्मल का क्या आया था वैल्यू, दैट इज नॉर्मल mg आया था, तो mg Vt is the value of work done by normal. And if we see the value, the work done by gravitational force, gravitational force के द्वारा कितना work done हो रहा है, gravitational force is downward, gravitational force नीचे लग रहा है और हम लोग का displacement ऊपर हो रहा है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री, मतलब ये नेगेटिव वर्क डन होगा. तो नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन पहले लिख देते हैं. फोर्स कितना, mg फोर्स, mg डिस्प्लेसमेंट ऊपर vt, mg vt. तो वर्क डन बाय नॉर्मल देखे और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ ये दोनों आया, एक पॉजिटिव में और लास्ट में देखते हैं कि टोटल वर्क डन कितना हो रहा है. वर्क डन टोटल कितना हो रहा है इज इक्वल्स टू, अब देखिए mg vt प्लस माइनस mg vt, ये दोनों जीरो है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये टोटल वर्क डन क्या आया, 0 आया. तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, और हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया जिसके द्वारा हर एक कंसेप्ट समझ में आया, कैसे निकालते हैं वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रिक्शन के द्वारा. तो अगर आपको ये अगले लेक्चर चाहिए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर द फर्दर अपडेट.